Okay, so starting with what is the meaning of articles? Articles are simple but critical part of speech. इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल होते तो बहुत सिंपल है like a, an और the are really simple but they are really important. If we will not use them in any speech or any sentence, then the sentence will be meaningless. So, articles are of two types, indefinite article and definite article. So, indefinite article is a or an, and definite article is the. Indefinite और definite के दो अलग मतलब होते हैं. Indefinite means when we are not sure. हमें कुछ श्योरिटी नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. But definite means when we are totally sure that about what we are talking. Okay, so we'll take an example. Give me a blanket and give me the blanket. In this example, give me a blanket means koi bhi blanket. Like we don't have any particular thing in our mind that which blanket we are talking about. So give me the blanket means हम किसी एक particular blanket की बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ वही blanket चाहिए. इन दोनों में ये डिफरेंस है. द को हम सिर्फ उस जगह यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलरली कहीं पे कुछ जरूरी सिर्फ वही चीज चाहिए होती है, कुछ पर्टिकुलर होता है. लेकिन हम अ उस जगह पे यूज करते हैं जब कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है, हम श्योर नहीं होते हैं. अगर कोई भी ब्लैंकेट या कुछ भी ले आओ तो हमें चलेगा. सो दैट इज नॉट द केस विद अ. ओके, सो आर्टिकल्स बहुत अलग जगह पे यूज किए जाते हैं. अ, एन और द का यूज करने का एक अलग तरीका होता है. अ को हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज करते हैं. We don't have to focus on the point like what is the first letter of the word. We don't have to see the first letter of the word, but basically what we have to see that which sound it is giving. It's giving consonant sound or it's giving vowel sound. We have to see to it. Like giving an example, before noun beginning with a consonant sound as a pen, a boy, a horse. So we are using a in front of pen, boy and horse क्योंकि ये consonant sounds हैं. प, ब, ह ये सारी consonant sounds हैं, तो इसीलिए हमने article a use किया. And before words which begin with a vowel, जब कोई word vowel के साथ शुरू होगा but लेकिन pronounce किया जाएगा consonant के साथ. So ये कुछ exceptions होती हैं. Exceptions का मतलब होता है कि कुछ अलग, जिस तरह जो रूल्स के साथ बांधा नहीं हुआ. दीज आर द थिंग्स विच वी कॉल एक्सेप्शंस. सो एक्सेप्शन होती हैं जिसमें ये वॉवल तो फर्स्ट वर्ड में है बट वी विल नॉट यूज as it's giving a sound of a consonant. So that is why I just said when you are just filling up a blank like a, an or the, when you are filling up the blanks, you just have to speak the line and you have to see that if in the blank the word we are speaking a, an or the, which sound it is giving. The word is giving which sound. If it's giving a sound of a consonant, we'll use a with that. If it's giving a sound of a vowel, we have to use an with that. So there are two cases basically. So as मैंने आपको indefinite articles के बारे में बताया कि a और an दोनों indefinite articles and definite articles होते हैं. Give me the blanket when this is the case. अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि article a is used when with the consonant sounds, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. और the article a is also used when a word is giving a word is starting with a vowel but it is giving a sound of a consonant. So this is a case: a useful book, a European, a university, a 1 rupee note. So in these case, it's giving a sound of a vowel. In the very starting there is a vowel u, e, u. These are the vowels basically, but when we speak it, a useful book, it's useful. A European, so these are giving a sound of a consonant, इसीलिए हमने इनके आगे भी a यूज किया. फर्दर हमारे a यूज वहाँ पे भी किया जाता है जब हम कोई सिंगुलर या काउंटेबल नाउन की बात करते हैं. हम वहाँ पे भी यूज करते हैं जब हम किसी सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सिंगुलर मीन्स जब हम किसी पर्टिकुलरली एक चीज के बारे में, जैसे अ यूनिवर्सिटी, तो हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने अ यूज किया. एंड जब हम अ 1 रुपी नोट, तो हम इसमें 1 रुपी नोट की बात करें, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड अ विद दैट.
Also, we can use a with countable nouns also. What are countable nouns? हम उनको गिन सकते हैं. Example, he is a teacher. He is a teacher. एक teacher. She doesn't own a car. मतलब उसके पास कार नहीं है. A car means उसके पास कार नहीं है, कोई भी कार नहीं है. मतलब when we can count things 1, 2 or 3, when we are able to count things, when the noun is countable, then we'll use a with that. This is also an example कि हम a कहाँ पर use करते हैं. अ और एन को यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं प्रॉपरली. अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वोवल साउंड्स. ओके, जब वोवल आएगा, वोवल साउंड आएगी, तब हम एन यूज करेंगे. जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तब हम अ यूज करेंगे. एंड इट डज नॉट मैटर इफ द वर्ड इज एन एडजेक्टिव, अ नाउन, एन एडवर्ब और एनीथिंग एल्स. द रूल इज एग्जैक्टली द सेम. अगर हम इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, इट डजंट मैटर. So simply we use a, an or the depending upon the sound which is being used in the sentence. Further, article an is used before the words which begin with the vowel, as I told you, and before letters with the vowel sound, as an ox, an eye, an orange, an elephant. So these are the words in which we are using an, as it's the starting of the word is a vowel only. O, E, O, E. So basically हमारे पास 7 vowels होते हैं, A, E, I, O, U. इन वॉवल्स, जब भी कोई वर्ड इन वॉवल्स के साथ स्टार्ट होता है तो हम उनके आगे एन यूज करते हैं. बट कुछ एक्सेप्शन इस केस में भी होती हैं. उन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए वी विल सी टू इट कि वो कौन सी साउंड दे रहा है. एक्सेप्शंस जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं. बिफोर द वर्ड्स व्हिच बिगिन साइलेंट, म्यूट, जब इसमें एच म्यूट है, that is why we are using an honest man, an are. जबकि इसके आगे vowel से starting नहीं हो रही है word की, it's starting from H. So basically we are using because it's giving a sound of a vowel. इसमें H mute है और जब हम बोलते हैं honest, it means it's giving a sound of O-N-E-S-T, honest. That is why हमने इसके आगे an use किया. और हम एन को और भी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं. लाइक जब हम कोई एब्रीविएशन, व्हेन वी आर यूजिंग समथिंग लाइक MA, MLA, CEO, जब ये सारी एब्रीविएशंस हम यूज करते हैं, देन आल्सो वी विल यूज एन इन फ्रंट ऑफ दैट. एंड MP, जब हम एब्रीविएशन यूज करेंगे तो उसके आगे भी एन यूज होगा. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम अ यूज करते हैं, हम उसकी साउंड चेक करते हैं कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं. जब हम कहीं पे भी फिलिंग द ब्लैंक करेंगे तो हमें 3-4 चीजें दिमाग में रखनी है. द थिंग्स आर दैट वी हैव टू सी इट्स गिविंग अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट और अ वोवल, and then we have to see that if it's giving a sound of consonant, then we have to use a, and if it's giving a sound of a vowel, we have to use an. Okay, so this is the case. And we have 2 types of articles, indefinite articles and definite articles, which I have already shared with you. Indefinite means we are not sure about that. Definite means that we are totally sure about that कि हमें वही blanket चाहिए. जब हम sure नहीं है कि कोई भी blanket चलेगा, then we use give me a blanket. So this is the case regarding that. And further हम आगे move करेंगे. Article the is used with superlatives as he is the tallest boy in the class. इसका मतलब ये है कि जब हम द आर्टिकल यूज करते हैं, हम उसे सिर्फ उसी पॉइंट पे यूज करेंगे जब हमें स्पेशली किसी पर्सन को या किसी चीज को पूरी क्लास में से दी बेस्ट बताना है. ओके, जब हम किसी चीज को बेस्ट बताना चाहते हैं तब हम उसके साथ द यूज करते हैं. सुपरलेटिव्स मीन्स हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर जब बताते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सो इट मीन्स कि वो पूरी क्लास में से सबसे लंबा लड़का है. Why we have used the with that, as we have to show that superlatives के साथ भी the use होता है पूरी क्लास में से. अगर हमने किसी को particularly target करना है तो that is why we are using
the with that. Also, Nile is the longest river. As you can see, it's written Nile is the longest river. हम सारे rivers में से Nile को the longest river बोल रहे हैं. इसका मतलब हम उसकी सारी क्लास में से काइंड ऑफ उसकी सारी स्पीसीज में से जितने भी रिवर्स हैं सब में से हम नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर बोल रहे हैं. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. अंकुर इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास. हम इसमें अंकुर को पूरी क्लास का बेस्ट लड़का बोल रहे हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया, जब हम पूरी क्लास में से किसी को बेस्ट बताना चाहते हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी में से वी हैव टू टेल दैट पर्सन एज द बेस्ट, देन हम उसके साथ द यूज करते हैं. और जिस तरह फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, तो टॉलेस्ट इज अ थर्ड फॉर्म, लाइक उसको हम लास्ट में सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हैं. तो उसमें जैसे बेस्ट, वर्स्ट, दीज आर द वर्ड्स, इनके साथ इनके सुपरलेटिव्स भी होते हैं. गुड, बेटर, better, best, these are the things like better, good, better, best. Best is the superlative. In this, tallest is the superlative, longest is the superlative, it's a third superlative. तो हम उस तक we will not go at that place, we'll just see that जब हम किसी चीज को सब में से particularly target करके best बताना चाह रहे हैं, kind of उसका adjective बताना चाह रहे हैं, तो we'll use the with that. Also, when we speak of a particular person or thing, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं एज द बुक. ऑलवेज जब आप यूज कर रहे हो आर्टिकल्स को, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि दैट आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण, इट्स अ बुक, राइट? We ask that Ramayana is a great book. If this is a sentence, we'll ask a question, which book? That is Ramayana. We are getting the answer from that sentence at which book. When we are getting the answer, it means we have to use the with that. We are talking about a particular thing, a particular book. We are not saying any kind of book. We are talking about a particular book. That is why we have used the with that. When a singular noun stands for the whole class, जब हम किसी singular noun को लेते हैं, जिस तरह we are talking about the cow is a gentle animal. What it means is कि हम सारे animals में से just we are saying that cow is a gentle animal. सारे animals में से सिर्फ cow ही एक gentle animal है, जिसको हम kind of शांत animal कहते हैं. बाकी सारे animals में से, that is why पूरी उनकी species में से we are talking about the cow. अब the हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम पूरी class में से, पूरी species में से we are just giving special attention to that animal. Okay? Further, talking about the lion is the king of beast. इसमें we are talking about lion, and in this, lion is the king of all the animals. Okay, so that is why we have used the lion. Reason behind that is उनकी पूरी species में से, सारी animals की community में से, we have just targeted lion as the king. So particularly we are talking about one animal and we know that which animal. It is lion. We are getting that answer. Okay, that is why we have used the with that. Even we are using before the names of mountains, river, lakes, island, etc. We will use the before using any mountain name or river name or lake name or island. Okay, we'll take an example as Mount Everest. इसमें we are talking about a particular mountain. That is Mount Everest. दुनिया में Mount Everest एक ही है. So we are talking about that particular mountain. We are not talking about any random mountain. Okay. So the Ganga is a sacred river. Ganga एक ही है, river एक ही है. That is why we have used the Ganga, क्योंकि हमारे पास गंगा सिर्फ एक ही river है दुनिया में, 2-3 rivers नहीं है गंगा नेम से. So that is why we have used the with that. Further example आती है before the names of sacred books and newspapers as the Ramayana. As I told you, जब हम किसी particular book या particular चीज के बारे में बात कर रहे हैं, that is the reason why we are using the with that. Further, the Bible. It's one book, it's a particular book available in the whole world. Bible जैसी कोई और copy नहीं है, उसकी कोई और book नहीं है. That is why we have used the with that. Also, the Times of India.
हम एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत कोई भी न्यूज़पेपर, हम एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं कि दैट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया, not any newspaper else than that. That is why we have just kept the in front of Times of India also. Before common nouns, which are the names of things unique of their kind as the sun, the sky, the moon, the earth. What it means is जब हम किसी common noun, like the thing is that जो पूरी यूनिवर्स में एक ही चीज प्रेजेंट है, सन दुनिया में एक ही है, बहुत सारे सन नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही सन है पूरी दुनिया में. That is why we have used the with that. Also, the sky. एक ही स्काई है, बहुत सारे स्काई नहीं है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, अ यूनिक थिंग, यूनिवर्स में एक ही चीज है वो, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द विद दैट. फर्दर, द मून, द अर्थ, जब हम स्पेशली उनको टारगेट कर रहे हैं कि द मून पर्टिकुलर चीज दुनिया में एक, मून एक ही है, अर्थ एक ही है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द विद दैट. ऑल्सो हम द वहाँ पर भी यूज करते हैं जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास यहाँ पे द फ्लूट, द सितार, द ऑर्केस्ट्रा, हमने इनके साथ द यूज किया है. जब कोई भी तरह का हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वील यूज द विद दैट. ऑल्सो यू हैव टू जस्ट सी दैट यही इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, गिटार और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हम सबके साथ द ही यूज करेंगे. इट्स नॉट अ गिटार, इट्स द गिटार. ओके, द फ्लूट, नॉट अ फ्लूट. ओके, फर्दर, so we'll just revise this thing that we use a before the words that start with the consonant sound, and before the words that start with the vowel sound. Other letters can also be pronounced either way. Just remember, it is the sound that governs whether you use a or am, not the actual first letter of the word. इसका मतलब क्या है कि हम जो अ और एन लगाते हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द साउंड दे प्रोड्यूस. इफ दे आर प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, वील यूज अ विद दैट. If they are producing a sound of a vowel, we use an with that. And when we are talking about something particularly, जब हम किसी चीज के बारे में particularly बात करते हैं, then we use the with that. So I'll give some examples. An example is the noun team. A team consists of many players. A team. And yet this is a singular noun. अब जैसे मैंने आपको बोला कि that we'll use a with singular noun, a team, एक टीम. टीम एक है, उस पूरी टीम को हम एक ग्रुप कंसिडर करके उसके साथ अ लगा रहे हैं. These are some examples and also exceptions are there. For honest man, are. These are the things जहाँ पे हम H silent है, that is why we are using and with that. Now I'll just tell you that some examples are there, some sentences that are there which will give you knowledge कि आपको कहाँ पे a use करना है, कहाँ पे and use करना है. We have to note that we use a in front of like a horse, a carrot, and in front of words with the vowel like a sound, an apple, an elephant. So you have to just note it down जब हम बात कर रहे हैं a, e, I, o, u, such kind of sounds, then हम use करेंगे उनके साथ and. For example, if I say let's read the book, तो इसमें I mean a specific book, the book, मैं किसी specific book के बारे में बात कर रही हूँ. If I say let's read a book, I mean any book rather than a specific book. मैं किसी भी book के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कोई specific book के बारे में बात नहीं कर रही. Now here's another way to explain it. The is used to refer to a specific or particular member of a group. आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि when the is used, the is only used when we are talking about a particular group or particular thing. Okay. Also, basically, an article is an adjective. And like adjectives, articles modify the nouns. जो nouns का meaning है, जो nouns sentences में meaning बनाते हैं, these are the things that modify it. जब हम a, an और the use करते हैं तो उस noun का basic सही मतलब तब निकलता है
Without articles इनका कोई मतलब नहीं है. Okay, and as I told you, a and am is used to refer to a non-specific or non-particular member of the group. जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो वी विल यूज अ और एम विद दैट एज दे आर indefinite articles. Okay, for example, I would like to go to see a movie. So इसमें हम किसी स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. It's like a movie, कोई भी movie. Okay, here we are not talking about any specific movie. We are talking about any movie. There are many movies and I want to see any movie. In this case, I don't have a specific one in my mind. जब मैं बोल रही हूँ कि I would like to go to see a movie, तो इसमें मेरे दिमाग में कोई specific movie नहीं है. Okay, so let's look at each kind of article a little more closely. Okay, so my daughter really wants a dog for Christmas. इस लाइन में this refers to any dog. We don't know which dog because we have not found the dog yet. That is why this is the reason behind that कि हम किसी particular dog के बारे में बात नहीं कर रहे हैं as we have not found the dog yet. Also, I'll write an example here. You just have to see कि मैं क्या लिख रही हूँ. Okay, like you just have to write in the copy pen. I'll give you time for that. Like somebody call a policeman. If somebody call a policeman, इसमें हम कोई specific policeman की बात नहीं कर रहे हैं. It's like this refers to any policeman. We don't need a specific policeman. We need any policeman who is available. इसमें हम किसी specific चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. That is why we are using a with that. So these are some things that you have to keep in mind जब आप इस बारे में a, an और the के बारे में discuss कर रहे हो. Also, when I was at the zoo, I saw an elephant. This is an example कि when I was at the zoo, I saw an elephant. An elephant, okay? क्योंकि here we are talking about a single, non-specific thing. In this case, an elephant is there, but E sound is used, that is a vowel sound. There are probably several elephants at the zoo, but there's only one we are talking about here. Okay? इस केस में हमने एन यूज किया क्योंकि एलिफेंट्स बहुत सारे हैं जू में, बट एन क्यों यूज किया? क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ई, वो एक वावल है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर यूजिंग अ और एन डिपेंड्स अपॉन द साउंड दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड. सो आपको मैं एक टेक्निक बताती हूँ कि आपको कहाँ पर यूज करना है. अ प्लस सिंगुलर नाउन beginning with a consonant like a boy, a car, a bike, a zoo, a dog. An plus singular noun beginning with a vowel. An elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. आपको देखना है कि आप सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज हुआ है या फिर प्लूरल नाउन. ओके, जहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज हुआ है विद अ कांस्टेंट तो हम उसमें यूज करेंगे. जहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज हुआ है विद अ वोवल तो उसमें हम एन यूज करेंगे. तो यू जस्ट हैव टू सी कि वहाँ पे एलिफेंट्स गिवन है या एलिफेंट गिवन है. एलिफेंट इज अ सिंगुलर नाउन. जब वहाँ पे एलिफेंट्स गिवन होगा मतलब बहुत सारे एलिफेंट्स, तो हम वहाँ पे एन यूज नहीं करेंगे. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं अ बॉय तो हम एक यहाँ पे सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन दैट. एंड जब हम बात कर रहे हैं मेनी बॉयज तो उसमें हम उनके साथ उसके साथ नहीं लगाएंगे. दैट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर थिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी बॉयज. ओके, so this is the case, and there are some examples it's written here that when we speak of a particular person then we have to use the with that. When a singular noun stands for the whole class, जब हम पूरी species में से पूरी class में से किसी singular noun को बोलना चाहते हैं तो उसमें हम फिर से the use करते हैं. There are so many cases why we use the, but still we stand here only अभी तक till musical instrument. That musical instruments के साथ भी हम the use करते हैं. And there are some points. I'll just tell you those points only. First point you have to see वो कौन सी sound produce कर रहा है. It's a consonant sound or a vowel sound. Second point you have to see that plural noun है या singular noun है. Okay, and
थर्ड पॉइंट यू हैव टू सी दैट उसमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है या इट्स नॉर्मल, लाइक गिव मी अ ब्लैंकेट, इट्स लाइक दैट ओनली, और इट्स गिव मी द ब्लैंकेट, टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्लैंकेट. Okay, so that is the case when we use a, an, or the. So I have given you a summary of where we have to use a, an, or the, but we have so many examples. So I'll share those examples so that you can get a little bit of knowledge about that. Okay, so one thing you have to keep in mind, as I told you earlier also, in some cases where H is pronounced, such as historical, this is a word historical, इसमें we can use an also, as however a is more commonly used and preferred. अब जो word है historical, इसमें h की sound है in the very beginning, but बहुत कम sound है h की. But when we are speaking honest और are, तो इन दोनों में h की sound बिल्कुल ही silent है, बिल्कुल ही mute है, and that is why we have used and with that. And when we are talking about the word historical, तो इसमें h की sound proper आ रही है, that's why we have used with that. Okay, so remember that these rules also apply when आप किसी भी तरह के sentence में उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो these rules are applied at that time. Only 3 points you have to keep in mind. And if the noun is modified by an adjective, like the choice between a and an depends upon the initial sound of the adjective. जिस तरह I'll give an example, a broken egg. Okay, इसमें broken is a adjective, but हम देखेंगे कि first sound कौन सी दे रहा है. So it's giving a sound of a consonant. Broken. That is why we have used with that. An unusual problem. Okay, it's unusual problem. इसके साथ हम an use कर रहे हैं, as a e i o u. इन सब के साथ हम an use करते हैं. That is why we have used and with that also. A European country. इस केस में it sounds like European, or it's European or European. So you have to just see that ये कौन सी sound दे रहा है. एक word को आप 3 बार बोल के देखो, you'll get that which sound is used there. So it begins with a consonant Y. When we are speaking it European, it's giving a sound of a Y in the very first word. It's giving an alphabet of Y when we are speaking it. So that is why we'll use with that. Always remember that in English, indefinite articles are used to indicate membership in a group. Okay, I am a teacher. I am a member of a large group known as teachers. इसीलिए हम इसमें अ यूज कर रहे हैं. जब हम किसी लार्ज ग्रुप के बारे में बात करेंगे, we use and with that. Also मैंने आपको बताया था कि that we'll use and also जब हम किसी की nationality, किसी का religion के बारे में बात करेंगे, we'll use and with that. Like when we are talking about an American. Okay, in this case, we'll use an. When we are talking about Irishman, we'll use an with that. जब हम किसी की religion के बारे में बात कर रहे हैं, Christianity, Hinduism, we'll use with Christianity and Hinduism. We are talking about a particular religion or caste. So, but in the front of Christianity, it's C. That means we'll not use am as it's not giving a sound of vowel. तो आपको ये भी देखना है कि if it's giving a sound of a vowel or not. You just don't have to learn these things. You have to memorize. You have to understand this topic basically. And this is the building part of English. जब आप कोई sentence बनाते हो, this is a building part. So you have to focus more on that in the very beginning.